Hello friends, welcome to Online Study Center. Today we are going to study Speedy Current Affairs July 2026 edition. In this video we cover all the important current affairs from 1st June 2026 to 30th June 2026 in one liner format. This is English edition. Before we begin, I'd like to tell you that this book is the English version of original Speedy Current Affairs Hindi edition. Since the Hindi editions contains more comprehensive data, it has been carefully converted into English for your convenience. I hope you will find this video useful. So without any further delay, let's get started with the Speedy Current Affairs July 2026 edition. शुरू करेंगे 1 जून 2026 से इन पहला है इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द ओपन एयर नेवल म्यूजियम नौसेना शौर्य वाटिका इनॉग्रेटेड। नौसेना शौर्य वाटिका इनॉग्रेटेड इन लखनऊ। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। एंड ओपन एयर नेवल म्यूजियम है नौसेना शौर्य वाटिका इनॉग्रेटेड इन लखनऊ। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वाज द रिनॉन्ड डिफेंस समिट सांग्रीला डायलॉग हेल्ड? इट वाज हेल्ड इन सिंगापुर। ठीक है, डिफेंस समिट है सैंग्रीला, वो कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में हुआ। नेक्स्ट है इन विच कंट्री हैज बैंड सोशल मीडिया अकाउंट फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16? तो मलेशिया ने बैंड किया है। ठीक है, मलेशिया हैज बैंड सोशल मीडिया अकाउंट फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। Next, what position did India secure at the 22nd Asian Under 20 Athletics Championship 2026 held in Hong Kong? So India secured second position. ठीक है, second position at 22nd Asian Under 20 Athletics Championship 2026 held in Hong Kong. Next, who has been appointed as the chairman of DRDO? The chairman of DRDO, Rajesh Kumar Singh. Rajesh Kumar Singh has been appointed as the chairman of DRDO. 2 जून में देखें, राजीव कृष्णा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? डीजीपी ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। राजीव कृष्णा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच इंडियन टीनेजर्स won the Earth Prize 2026 for their plastic innovation made from tamarind seeds? तो ये है अवन्या मेहता, आर्याना अग्रवाल और विवान छाछवरिया छावछरिया। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन स्कूल एजुकेशन? तो पंजाब। पंजाब इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट। पंजाब रैंक फर्स्ट इन स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट है विच ई कॉमर्स कंपनी पार्टनर्ड with the Bombay Stock Exchange BSC to launch Project Shikhar? ये मीसो है। ठीक है, the correct answer is मीसो। मीसो is the e-commerce company partnered with the Bombay Stock Exchange to launch Project Shikhar. Next, which country's 80th National Day was celebrated on 2nd June? ये है इटली। इटली uh, Italy celebrated his 80th National Day on 2nd June. Next, where was the successful test of indigenous Rudram 2 air to surface missile conducted? ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, सक्सेसफुली कंडक्टेड इन उड़ीसा। नेक्स्ट है अंडर ऑपरेशन डेल्टा हंट इन विच स्टेट वेयर 362 इलीगल बांग्लादेशीज नेशनल एप्रीहेंड? तो ये गुजरात में अंडर द ऑपरेशन ऑफ डेल्टा हंट। ठीक है, आते हैं 3 जून में। Who has been elected president of the 81st session of United Nations General Assembly? ये है खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान has been elected president of 81st session of the United Nations General Assembly. Next है the central government has extended the PM Swanidhi scheme which provides collateral free loans to street vendors until which year? Is to 2030. 2030 is the correct answer. Okay, the central government has extended the PM Swanidhi scheme, which provide collateral free loans to street vendor until 2030. Next, where will India's first special economic zone developed by an urban local body to be established?
ये पुदुचेरी में हुआ है, ठीक है। India's first special economic zone developed an urban local body be established in Puducherry. Next, which alliance launched an underwater drone program to enhance maritime defense capability? It's AUKUS. AUKUS means it's Australia, UK, and US. Okay. Alliance launched underwater drone program to enhance maritime defense capabilities. Next, who has been appointed as the chairperson of CBSC? It's Prashant Sitaram Lokhande has been appointed as the chairperson of CBSC. अब आते हैं 4 जून में, which private university became the first to launch the India AI Data Lab? Chandigarh University became the first university, first private university become who launched the India AI Data Lab. Next है, which space agency has officially concluded the Maven mission launched in 2013? The NASA agency, NASA is a space agency who who has officially concluded the Maven mission launched in 2030. Next है, uh, the International Cricket Council यानी ICC has revoked the membership of which country? तो कनाडा का मेंबरशिप ले लिया गया है, वापस अब रद्द कर दिया गया है बाय ICC. नेक्स्ट, where will the world's first nuclear dustbin named Onkalo be built? ये फिनलैंड बना रहा है फर्स्ट न्यूक्लियर डस्टबिन. नेक्स्ट है, which country has been elected to the United Nations Security Council for the first time? किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान has been elected to the United Nations Security Council for the first time. Next, which country has become the world's second largest solar power market? India has become the second world's second largest solar market. Next, who has been appointed as the secretary of CBSC? So Barun Bhardwaj has been appointed as the secretary of CBSC. Next, in which union territory was the first model border village developed at Chumur village? ये है लद्दाख, लद्दाख में है, ठीक है. ये लद्दाख इज a union territory and the first model border village developed at Chumur village in Ladakh. Next है Surahatal. Surahatal means Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary, in which state has been declared India's 100th Ramsar site. ये उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर किया गया है 100th Ramsar site. आते हैं 5 जून में, ट्रॉपिकल स्टॉर्म Jangami has severely affected which country? It's a tropical storm है Jangami, affected Japan. Next, who became the first footballer to receive the 2026 Princess of Austria's award for sports? ये लियोनेल मेसी को दिया गया है. आते हैं 6 जून में, who won the Norway Chess 2026 title? ये आर प्रज्ञानंद को दिया गया है. हु वॉन द नॉर्वे चेस 26 टाइटल? ये जीता है आर प्रज्ञानंद. नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्ड द 73rd प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एट विच प्लेस? शिलोंग में हुआ है, ठीक है, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह गए थे और भाग लिया है 73rd प्लेनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. Next, who has been appointed as the brand ambassador of Visa India's Bharat campaign? This is Shahrukh Khan. Shahrukh Khan has been appointed as the brand ambassador for Visa India's Bharat campaign. Next, who became the second woman in the India to directly appointed as the judge of the Supreme Court from the bar? So, ये है Venkata Subramani Mohana become the second woman in India to be directly appointed as the judge of the Supreme Court from the bar. Next, which company launched the AI designed Majorana 2 quantum chip? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है. माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च द AI designed Majorana 2 quantum chip. Next, which team won the under 18 Asia Cup men's hockey title? So it's India. India won the under 18 Asia Cup men's hockey title. Next, who became the youngest Indian women to win a Kosovo World Table Tennis Championship title? ये है दिव्यांशी भौमिक.
became the youngest Indian woman to win Kosovo World Table Tennis Championship title. Next, who won the French Open 2026 women's singles title? We have Mira Andreeva. Mira Andreeva won the French Open 2026 women's singles title. Next, which university has been officially permitted by the Prime Minister Education to permitted by the Minister of Education to open its campuses across India? We have University of Liverpool, Liverpool. ठीक है, University of Liverpool has been officially permitted by the Ministry of Education to open its campus across India. आते हैं 7 जून में. Where was the Hawk Digital System for Wildlife Crime Management launched? It was launched in Kerala. Okay, the Hawk Digital System for Wildlife Crime Management launched in Kerala. Next, who has been appointed as the Vice Chief of Air Staff? We have Asutosh Dikshit. Asutosh Dikshit has been appointed as the Vice Chief of the Air Staff. Next, where was India's 7th Regional Meteorological Center inaugurated? It was inaugurated in Jammu. Next, which state government launched the statewide campaign Yogandhra 2026? It was launched in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh government launched the statewide campaign Yogandhra 2026. Next, where did Union Home Minister Amit Shah inaugurate the newly constructed Sabrisam building in the Ayyappa Temple complex? तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ओपन हुआ है. आते हैं 8 जून में. 8 जून में देखा जाए तो which became the 36th state or UT to implement the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AB PMJAY. ये वेस्ट बंगाल है. वेस्ट बंगाल became the 36th state or UT to implement the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. Next, who won the SAF Women's Championship 2026 title? It's India. India won the SAF Women's Championship 2026 title. Next, who won the French Open 2026 men's single title? ये है Alexandra Zverev. Alexander Zverev won the French Open 2026 men's single title. Okay. Next, who received the Union Military Gender Advocate of the Year Award 2025? It's Abhilasha Barak. Abhilasha Barak receives the Union Military Gender Advocate of the Year Award 2025. Next, who won the Monaco Grand Prix 2026? It's Kimi Antonelli. Next, the biennial SAREX exercise was conducted between Japan and which country? It's between Japan and South Korea. आते हैं 9 जून में. In which state was the Singapore Special Task Force launched for women's safety? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है. तमिलनाडु स्टेट वाज में लॉन्च किया गया सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स फॉर women's safety. Next, which country secured first place at the World Yogasan Championship 2026 held in Ahmedabad? It's India. India secured its first place at the World Yogasan Championship 2026 held in Ahmedabad. Next, who received the Banker of the Year award at FE Best Banks Award 2026? ये है के सत्यनारायण राजू. ठीक है, के सत्यनारायण राजू received the Banker of the Year award. Next, the first export consignment of GI tag Tejpur lychee was shipped to Dubai and Singapore from which state? ये आसाम. ठीक है, आसाम से आसाम का जो GI टैग तेजपुर लीची है उसे भेजा गया है दुबई और सिंगापुर. नेक्स्ट है who became the fourth Asian athlete to cross the 90-meter mark in the javelin throw? ये है रोमेश पथिरागे. नेक्स्ट है who has been appointed as the president of भारतीय विद्या भवन? तो ये बनवारीलाल पुरोहित. बनवारीलाल पुरोहित has been appointed as the president of Bharatiya Vidya Bhavan. Next, where was the International BRICS Agriculture Conference held from 9 to 13 June 2026? It was held in Indore, Madhya Pradesh. Okay. Next, which lieutenant commander of the Indian Navy was awarded to the Shaurya Chakra? ये सूरज प्रसाद. सूरज प्रसाद को दिया गया है, लेफ्टिनेंट कमांडर है जिसको मिला है इंडियन नेवी ने अवार्ड दिया है सूर्य चक्र. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सीपीडी रिपोर्ट what is the total number of nuclear weapons possessed by India?
तो ये है 190। सीपी अकॉर्डिंग टू सीपी रिपोर्ट इंडिया के पास अभी 190 न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हु बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 इन द अंडर 13 टेनिस कैटेगरी, ये सृष्टि किरण, ठीक है। सृष्टि किरण बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन द अंडर 13 टेनिस कैटेगरी। आते हैं 10 जून में, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड द टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट जॉब, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने अबॉलिश कर दिया है टू चाइल्ड पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्त्री राइट इनिशिएटिव टू इंश्योर वुमेन्स सेफ्टी, ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्त्री राइट initiative to ensure women's safety. Next, who won the Women's Asian Individual Chess Championship 2026 held in Mongolia? ये है सविता श्रीभास्कर। सविता श्रीभास्कर won the Women's Asian Individual Chess Championship 2026 held in Mongolia. Next है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल has been elected as the president of cricket board of which country? तो बांग्लादेश का है, ठीक है। तमीम इकबाल has been elected as the president of cricket board of बांग्लादेश। नेक्स्ट है where will India's first AI enabled hyperscale data center be established? It गुजरात में establish हो रहा है, ठीक है। India's first AI enabled hyperscale data center. Next है ईरान launched Operation Nasr against which country? It was against Israel, ठीक है। ईरान ने लॉन्च किया है ऑपरेशन नसर अगेंस्ट इजराइल। आते हैं 11 जून में, Which country approved NEO, the world's first commercial chip? ये चाइना ने अप्रूव किया है नियो द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल चिप के रूप में। नेक्स्ट है वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड विनी जून लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर द राहवीर स्कीम टू असिस्ट रोड एक्सीडेंट विक्टिम, तो ये रैपिडो ने, ठीक है। The Ministry of Road Transport partnered with Rapido for the Rahavir scheme to assist road accident victim. Next, where was the 23rd FIFA World Cup 2026 inaugurated? It was inaugurated in Mexico. ठीक है. Next, which city became the first under India's Easy Connect model for international travel? ये है वाराणसी। वाराणसी city becomes the first under India's Easy Connect model for international travel. Next, which countries will host the 10th ICC Women's T20 World Cup 2026? ये इंग्लैंड एंड वेल्स है, ठीक है। जो हो इंग्लैंड और वेल्स जो है इसको होस्ट करेगा द 10th ICC Women's T20 वर्ल्ड कप 2026। 12 जून में आते हैं, Where was the 114th International Labour Conference held on 12 June 2026? ये जेनेवा में हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। Next, which became the first Indian state to officially recognize and promote the operation of solar powered charkhas? Uttar Pradesh became the first Indian state to officially recognize and promote the operation of solar powered charkhas. Next है the former president of which country was sentenced to 30 years in prison? ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, ठीक है, sentenced to 30 years in prison. Next है Kane Williamson retired from international cricket. He is a cricketer from which country? He is a cricketer of New Zealand. ठीक है। Next है which IIT released the world's most detailed 3D atlas of the human brain stem? ये IIT मद्रास ने रिलीज किया है the world's most detailed 3D atlas of the human brain stem. Next है where was the 13th BRICS Urbanization Forum held under the India's presidency on 11 and 12 June 2026? ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ 13th BRICS Urbanization Forum held in New Delhi. Next है scientists from which country discovered the world's largest whale graveyard in the Indian Ocean? ये चाइना ने खोजा है, ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ चाइना। 13 जून में आते हैं, which country
activated its full-time space weather monitoring satellite Solar One. ये यूनाइटेड स्टेट ने एक्टिवेट किया है. यूनाइटेड स्टेट एक्टिवेटेड इट्स फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट सोलर वन. नेक्स्ट, विच पोर्ट was declared India's best container port. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डिक्लेयर किया गया है India's best container port. Next, which country became the world's third largest aviation market? ये बना है इंडिया. इंडिया became the world's third largest aviation market. Next, which became the 33rd state to adopt the national e-Vidhan application. ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल became the 33rd state to adopt the national e-Vidhan application. Next, who has been appointed as the chief of the Indian Army? ये है धीरज सेठ. धीरज सेठ has been appointed as the chief of the Indian Army. Next, who became the first Indian to win prestigious Russia Grand Sand मास्टर कप 2026. ये है सुदर्शन पटनायक. ठीक है, सुदर्शन पटनायक become the first Indian to win the prestigious Russia Grand Sand Master Cup 2026. Next, which state became the third in India to ban highly toxic herbicide पैराक? ये है तेलंगाना. आते हैं 14 जून में. Where was the 11th meeting of the नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल held? ये नई दिल्ली में हुआ है. ठीक है, 11th meeting of नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल. नेक्स्ट, which IIT developed the portable device Arsan Safe? कि IIT भुवनेश्वर ने डेवलप किया है. IIT भुवनेश्वर डेवलप द पोर्टेबल डिवाइस Arsan Safe. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द भारत इनोवेट समिट in Nice in which country during 14 to 16 जून 2026. ये फ्रांस में हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है, which state government approved the restoration of original names of 64th places? ये ओडिशा ने कहा है. ठीक है, ओडिशा रिस्टोर करेगा the original names of 64 places. Next, under Operation Milap, which state government reunited 1470 missing person with their family? ये गुजरात की सरकार ने किया है. ऑपरेशन मिलाप के तहत रियूनाइट किया है 1470 मतलब 1470 मिसिंग पर्सन्स with their families. Next है, who has been appointed as the new military advisor to the National Security Council Secretariat? ये है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई. राजीव घाई Lieutenant General Rajiv Ghai has been appointed as the new military advisor to the National Security Council Secretariat. Next is the World Bank. The World Bank has projected India's GDP growth rate at the percentage of financial year 2026-27 is 6.6%. आते हैं 15 जून में. Where did the G7 Summit 2026 begin? तो ये एवियंस लेस बेंस में हुआ है जो कि फ्रांस में है. नेक्स्ट है, इन विच स्टेट हैज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड अ ड्रोन बेस्ड पोस्टल सर्विस? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है. नेक्स्ट है, विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव द एम्बो गोल्ड मेडल 2026 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू बायोलॉजी? ये है गौतम देव. नेक्स्ट है, द जदोपटिया पेंटिंग ऑफ विच स्टेट रिसीव द जीआई टैग? ये झारखंड का है. जदोपतिया पेंटिंग ऑफ स्टेट रिसीव द जीआई टैग, रिसीव झारखंड का. ठीक है. नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियोलिगेंड थेरेपी फॉर एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर? ये इंडिया ने लॉन्च किया है. इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियोलिगेंड थेरेपी फॉर एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर. नेक्स्ट है, which organization adopt the first global convention to establish international labor standards for gig and platform workers? ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO. Next, in which state was the प्रियदर्शनी फ्री बस ट्रैवल स्कीम लॉन्च फॉर women? ये केरल में लॉन्च किया गया है. केरल state was launched the प्रियदर्शनी फ्री बस ट्रैवल स्कीम. Next है, Prime Minister Narendra Modi became the first Indian Prime Minister to visit
विच यूरोपियन कंट्री? तो ये स्लोवाकिया, स्लोवाकिया को विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? ये है आइसलैंड। आइसलैंड रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। नेक्स्ट है, हु वाज द ओनली इंडियन included in Time's 100 most influential athletes of the 2026? ये है स्मृति मंधाना। Next is the traditional musical instrument sarinda of which state received the GI tag? यह है त्रिपुरा का traditional musical instrument है sarinda who received the GI tag. Next है, where will the Fit India Cyclothon be organized? ये मुंबई में होगा, ठीक है, मुंबई will organize the Fit India Cyclothon. Next, which became first temple in West India to receive a trademark? यह जगन्नाथ टेम्पल। Next, by which year has India set the target of achieving 155 gigawatt of wind power capacity? तो ये है 2035 तक भारत ने टारगेट रखा है ऑफ अचीविंग 115 गीगावाट विंड पावर कैपेसिटी। आते हैं 16 जून में, हु इनॉग्रेटेड द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 इन न्यू दिल्ली? तो यह है ओम बिरला। ओम बिरला इनॉग्रेटेड द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, the ALT bridge, the ATL bridge agreement was signed between India and which country? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन हुआ है एग्रीमेंट। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was conferred with the highest civilian award of which country? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, तो ये है स्लोवाकिया का, ठीक है। 17 जून में आते हैं, which state government increased the cooperative crop loan waiver limit to 75,000? ये तमिलनाडु ने किया है, इंक्रीज किया है cooperative crop loan waiver limit to 75,000. Next is the Prime Minister Defense, the Ministry of Defense approved new NCC state directorates of Andhra Pradesh and which other state? ये आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट है, physicists from Europe and which country developed the world's first working nuclear clocks using the thorium 229 nucleus? ये है physicist of Europe from Europe and China, ठीक है, developed the first working nuclear clocks using the thorium 229 nucleus. Next है, who has been appointed as the Inspector General of the National Investigation Agency यानी NIA? तो ये है आपको पी सुंदरराज, ठीक है, पी सुंदरराज हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेक्स्ट है, which city ranked first among Asia's AI startup cluster? तो ये है बीजिंग। बीजिंग became the first among the Asia's AI startup cluster. Next, where has India's tallest wind turbine been installed? ये है कर्नाटका में इंस्टॉल किया गया इंडियाज टॉलेस्ट विंड टर्बाइन। Next, Bihu Pepa. Bihu Pepa, which received the GI tag, is the traditional musical instrument of which state? ये है आसाम का। Bihu Pepa received the GI tag of the traditional musical instrument of Assam. 18 जून में आते हैं, 18 जून, schools from which state were included in the national list of स्वच्छ and green schooling ranking? green school ranking में तो ये उत्तर प्रदेश का है। school from उत्तर प्रदेश were included in the national list of the स्वच्छ and green school ranking. Next, who has been appointed as the chairman of the National Statistical Commission? It's Saibal Chattopadhyay. Saibal Chattopadhyay has been appointed as the chairman of the National Statistical Commission. Next है, which country has fixed the minimum age of 15 years for using social media? तो ये है United Arab Emirates, UAE. UAE has fixed the minimum age of 15 years for using social media. Next, according to the QS World University Ranking 2027, which institutions has been ranked as the India's top educational institutions? ये है IIT Delhi, ठीक है, IIT Delhi ranked top educational institutions in India. Next है, during 11th hour ocean conference, how many countries adopted the Mombasa Declaration? ये है 15th country, 15 country. Next है,
The Jazdan Patari chest of which state received GI tag? ये है गुजरात का. Next, researchers discovered approximately 15 million years old fossils in which state? ये है उड़ीसा का. ठीक है. Researchers discovered approximately 15 million year old fossils in उड़ीसा. आते हैं 19 जून में. Where was India's premier international exhibition Bharat BuildCon 2026 organized? It was organized in New Delhi. ठीक है. न्यू दिल्ली में इंडिया प्रीमियर इंटरनेशनल एग्जीबिशन भारत बिल्डकॉन 2026 organized in New Delhi. Next, a Bengaluru-based government AI startup Sarvam AI becomes India's which unicorn? तो ये है 113th unicorn. ठीक है. Next है which became the first Central Asian country to join the New Development Bank (NDB). ये उज्बेकिस्तान. ठीक है. Uzbekistan became the first Central Asia country to join the New Development Bank. Next, where will India's first Center of Excellence for Nuclear Engineering Design be established? ये IIT हैदराबाद में. ठीक है. IIT हैदराबाद में ये है India's first Center of Excellence for Nuclear Engineering Design to be established in Hyderabad, IIT Hyderabad. Next, which indigenously built hovercraft was inducted into the Indian Coast Guard fleet in Goa? तो यह है H561. आते हैं 20 जून में. In which country was the military exercise Khan Quest held? ये मंगोलिया में हुआ है. Next, which Indian city ranked 18th in the list of the world's best art and culture cities? ये है जयपुर. जयपुर है इंडियन सिटी रैंक 18th in the list of the world's art and craft culture cities. जयपुर. Next, where will the first traditional Hindu temple be inaugurated? It was ये है फ्रांस में. ठीक है. The first traditional Hindu temple be inaugurated in France. Next, in which country was the Pitch Black 2026 military exercise conducted? तो ये है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में होगा the Pitch Black 2026 military exercise. Next है which became the only Indian company to feature the WIPO Global Top 20 patent ranking. यह है Jio. Jio became the only Indian company to feature the WIPO Global Top 20 patent ranking. आते हैं 21 जून में. In collaboration with the Abbott, the Indian Medical Association declared 21st June was which day? यह है विटामिन डी डे. ठीक है. Next है which Indian has been appointed as the judge of the International Tribunal for the Law of the Sea? ये है Bimal N Patel. Bimal N Patel, the Indian, has been appointed as a judge of the International Tribunal for the Law of the Sea. Next है what rank did India secure in the World Economic Forum Energy Transition Index 2026? ये है 17th रैंक. ठीक है. 17वां रैंक हासिल किया है इंडिया. नेक्स्ट है where was the first fully women operated police station inaugurated? तो ये है दिल्ली में. दिल्ली में the first fully women operated police station. Next, who became the highest wicket taker in the women's T20 international? ये है दीप्ति शर्मा. दीप्ति शर्मा became the highest wicket taker in the women's T20 international. Next, who won the second South Asian Throwball Championship 2026 held in Ranchi? तो ये है इंडिया. इंडिया won the second South Asia Throwball Championship. Next, who won the Barcelona Grand Prix 2026? ये है लुइस हैमिल्टन. नेक्स्ट है which Indian received the Wolf Prize in Physics 2025? तो यह है जैनेंद्र जैन. आते हैं 22 जून में. Where was the 2-day BRICS Security Conference held? यह न्यू दिल्ली में हुआ है. 22 और 23 जून को हुआ है 2-day BRICS Security Conference. नेक्स्ट है who has been appointed as the Solicitor General of India? ये बने हैं तुषार मेहता. तुषार मेहता has been appointed as the Solicitor General of India. Next है the Kardian Bees Railway Line project is related to which state? ये related to पंजाब है. The Kardian Bees. Next है who became the first Indian cricketer in the world to play 200 women's T20 internationals? ये हरमनप्रीत कौर. ठीक है. Next, who became the highest goal scorer?
In football World Cup history, yeah, Lionel Messi became the highest goal scorer in the football World Cup history. Next, who won the FIH Nations Cup 2026? India won. India won the FIH Nations Cup 2026. Next है Khorasani tamarind, which received the GI tag, belongs to which state? ये मध्य प्रदेश। खुरासानी टैमरिंड जो है जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है विच बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये है पुंछ, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पुंछ जिसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच यूनियन टेरिटरी हैज बैन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड लिटरिंग? तो ये है लद्दाख। लद्दाख ने बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक और वहां कचरा फैलाना जो है बैन कर दिया गया है लद्दाख के द्वारा। आते हैं 23 जून में। Who was honored with the best male athlete of the year award? यह है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा was honored with the best male athlete of the year award. Next है Chennai Petroleum Corporation Limited यानी CPCL became the India's which नवरत्न कंपनी? यह 28th नवरत्न कंपनी बना है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है which became India's sixth fully literate state under उल्लास इनिशिएटिव? यह है उत्तराखंड। Next, which country has become the world's largest ship recycling nation? ये है इंडिया। India has become the world's largest ship recycling nation. Next, in which state will India's first 3D printed artificial reef module be installed? ये तमिलनाडु, ठीक है। आते हैं 24 जून में। At which location did commercial operations begin at India's first private gold mine? यह है कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। 25 जून में आते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च निर्भय चेतन प्रोग्राम? यह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है निर्भय चेतना प्रोग्राम। नेक्स्ट है इन विच कंट्री वाज द स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉलोइंग डिवास्टिंग अर्थक्वेक? यह वेनेजुएला में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है अर्थक्वेक आने के बाद। नेक्स्ट है वेयर वाज द खीर भवानी मेला ऑर्गेनाइज? खीर भवानी मेला ऑर्गेनाइज इन जम्मू कश्मीर। आते हैं 26 जून में। What rank did India score in the QS World Future Skill Index 2027? So India scored 13th rank. India secured 13th rank in the QS World Future Skill Index 2027. Next, which Indian was honored with the Global Prestigious Award in the UK Parliament? ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन was honored with the Global Prestigious Award in the UK Parliament. 27 जून में देखा जाए in which state was the Sri अंबाबाई टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट विच कंट्री बिकेम द 27th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ये बांग्लादेश बिकेम द 27th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। नेक्स्ट विच एजेंसी लॉन्च्ड ऑपरेशन चक्रा फॉर अगेंस्ट द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क इन इंडिया? ये है सीबीआई लॉन्च। नेक्स्ट है who has been appointed as the head of the Vision 2028 program and fast bowling coach by the Cricket Association of Bengal? ये अशोक डिंडा has been appointed as the head of the Vision 2028 program and fast bowling coach by the Indian Cricket Association, sorry, by the Cricket Association of Bengal, ठीक है। नेक्स्ट where was the Hemis Festival 2026 celebrated? It was celebrated in Ladakh. Hemis Festival 2026 was celebrated in Ladakh. 28 जून में आते हैं। Which became the first major port in India to use enterprise AI? यह है चिदम्बरम पोर्ट। नेक्स्ट है FIFA suspended the football association of which country? यह है नेपाल। FIFA suspended the football association of Nepal. नेक्स्ट है which Indian airport becomes the world's third most family friendly airport? यह है कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट become the world's third most family friendly airport, ठीक है। नेक्स्ट where was the new spider species named Ballista spider discovered? It was discovered in Australia. 29 जून में आते हैं। In which city was the 12th India EU Human Rights Dialogues held? In न्यू दिल्ली में हुआ।
नेक्स्ट है सीखना ज्वाला नेशनल पार्क, फेमस फॉर इट्स गोल्डन लंगूर, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है आसाम में। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? ये महेश दीक्षित हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। नेक्स्ट है द सुपर कंप्यूटर लाइन साइन ऑफ विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? ये है चाइना का। नेक्स्ट है with which theme was National Statistics Day 2026 observed? ये unlocking the potential of administrative data। तो चलिए वीडियो समाप्त हुआ इंग्लिश एडिशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। हाँ, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, हम उस पर और भी फोकस करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।